Hello students, with this hope that you have understood the part 5 video or 1, 2, 3 or 4 part of this chapter first, chemical reactions and equations. Let's in part 7 video I start the 4 type of basic chemical reaction which is known as the double displacement reaction. Before this reaction we have completed the third type of reaction, displacement reaction, and in that part you have learned what are the displacement reaction, the reactions in which the more reactive metal or element displaces the less reactive element or metal from its compound or solution. So hopefully you have understood and learned it. Let's start the fourth type of reaction which is known as the double displacement reaction. But before to start double displacement reaction, you have to know some basic terms to understand what are the double displacement reactions. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, कुछ टर्म्स आपको बता रहा हूँ, so that you can easily understand, you could be able to understand what the double displacement reactions actually are. So first let's start. First one is ionic compound. So now we discuss what are the ionic compounds. Those compounds which are formed or made with the ions. Those compounds which formed with the ions, with the combination of ions, and the ions are of two types, positive ion and negative ion. Let's see some example. कुछ examples देखते हैं. I am having sodium chloride NaCl. Next is hydrogen chloride HCl. Next is NaOH sodium hydroxide. Next is AgNO3 silver nitrate. Next is calcium chloride CaCl2. And like the same MgCl2 magnesium chloride, MgO magnesium oxide, CH3COOH acetic acid, it is also known as the vinegar, or it may be MgO, it is CaO calcium oxide, etc. So there are a number of examples of the ionic compounds which are actually the combination of positive ion and negative ion. In all of these compounds that I have written here at this board, the first part like the sodium, hydrogen, sodium, magnesium, calcium, silver, magnesium or calcium, these all are positive ions. Clear? In this, hydrogen is positive part. Generally it comes first in the compound, positive ions, but in this case it comes the second part, it becomes the second part. And the second part of this compound like chlorine, hydroxide ion, chloride ion, nitrate ion, oxide ion and acetate ion or oxide ion, these are the negative ions. So such compounds, these all you have studied in the 9th class, the symbols, how the compounds are formed, writing the chemical formulae. So how you write the chemical formula of the different compounds with the help of the valency. So that means again you have to learn the valency of different elements, and you have studied in 9th class. So learn the valency clearly.
On the basis of valency, we write the valency and then cross multiply and the chemical formula is formed. Clear? So these are the ionic compounds in which there are two portions, positive ion and negative ion. Now we move on take the screenshot if you want to. Yes. Now I move on. Let's move on. In a chemical reaction products. अब हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे इन अ केमिकल रिएक्शंस. फर्स्ट द लेफ्ट हैंड साइड written the reactants, you have already learned it, reactants, and the right hand side we write the products. So what type of products are actually formed in a chemical reaction? Products may be in solid form, products may be in liquid form, a product may be in gaseous forms. We also use the symbol upward, the head toward the upward direction, or it may be in aqueous form, solution form, we write AQ. और so basically प्रोडक्ट जो बनते हैं वो इन फॉर्म्स में बनते हैं. बट वी टॉक अबाउट इफ द प्रोडक्ट इज सॉल्युबल, इफ द प्रोडक्ट इज इन सॉलिड फॉर्म. अगर प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में भी वो कितने तरह से बन सकता है. मे बी इट इज द सॉलिड जो प्रोडक्ट है इट मे बी सॉल्युबल और इट मे बी इनसॉल्युबल. जो प्रोडक्ट बनते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आफ्टर द रिएक्शन, these product may be soluble or insoluble. If it is soluble, then it is known as the aqueous form. Clear? And if it is in insoluble form, it is also the form of the solid. Insoluble है, ये mix नहीं होता है. It is soluble, ये mix dissolve रहता है solution के अंदर. So if a product is in insoluble form, then this insoluble form मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे पास में ये टेस्ट ट्यूब है एंड आई हैव सम सॉल्यूशंस इन इट एंड दिस प्रोडक्ट इज इन इनसॉल्युबल फॉर्म. दिस नीचे जो है बॉटम पे बैठा मिल जाएगा अगर आप थोड़ी देर के लिए रख के छोड़ दें. एज वी add the quicklime with the water and mix it, and in the morning what we see, the product form just we see at the bottom of the tub. जब चूना पानी में घोला जाता है तो सुबह उठ के जब हम देखते हैं तो वो जो घुला हुआ जो आपके पास में प्रोडक्ट है वो बॉटम पर लगा हुआ मिलता है टब के. सो दैट इज द इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, एंड दिस इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज द प्रेसिपिटेट. Precipitate. In short, it is written as PPT. And for the symbol, if we want to use symbol, then we use a downward arrow. For gas, we use an upward arrow, and for precipitate or the insoluble form of the product or any type of compound is known as the precipitate, and it is symbolized with PPT or downward arrow. So I think you would be clear what is the precipitate. Precipitate जो बॉटम पर मिल जाए थोड़ी देर रखने के बाद सॉल्यूशन में और ऊपर सॉल्यूशन नजर आए. And this insoluble form, it is also a form of a solid. It is known as the precipitate, and precipitate in short written as the PPT, and it is symbolized with a downward arrow. Is it clear? Take the screenshot. Next. Now we move on. In your previous 7th, 8th class, you must have came to know what are the acids or bases.
acids or bases. Acids you have studied sour in taste, bases bitter in taste, isn't it? Yes, it is. And you came to know that acids turn blue litmus paper or solution, blue litmus paper or solution to रेड कलर. ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को या पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, एंड द बेसिस टर्न द रेड टू ब्लू कलर, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कलर. वन मोर हायर स्टैंडर्ड इज acids generally forms H plus ion in its solution. जब हम किसी एसिड को सॉल्यूशन फॉर्म में देखते हैं तो वो एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है. दैट मीन्स पॉजिटिव आयन like HCl, so H plus and Cl minus. H2SO4, second acid, this is the hydrochloric acid, this is the sulfuric acid. It release what? H plus and HSO4 negative ion. Clear? And in the cases of bases, it forms hydroxide ion. Hydroxide ion. What is it? What it is? Hydroxide ion. OH, like NaOH. OH ion negative in its solution, like KOH negative. So generally acids forms hydrogen ion and bases forms hydroxide ion. So these are some basic information for the acids or bases, and in detail we will study in the next chapter acid, bases and salts. So why we are reading this, why we are studying this topic? Because when an acid react with a base, it forms salt and water molecule. When an acid react with base, it always forms salt and water. Always. It forms always. And this type of reaction is known as the neutralization reaction. Neutralization reaction. ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. दैट मीन्स एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं. एग्जाम्पल, एसिड आई एम टेकिंग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस बेस NaOH, sodium hydroxide, because OH and this is H plus, and after the reaction product are salt. Salt means, अब यहाँ पे देखें दोनों की ये आयंस एक्सचेंज होंगे. Na react with Cl and H react with H2, then what forms? NaCl. आप जानते हैं NaCl हम सॉल्ट को कहते हैं, एंड प्लस OH और H, OH and H, what is H2O and the molecule of water. So this is an example of neutralization reaction. What is the neutralization reaction? Neutralization reaction are those type of reactions in which an acid react with base and forms salt, a molecule of water, or the molecules of water. For example, this is an acid, hydrochloric acid, and this is a base, sodium hydroxide. When these react with each other, these are the ionic compounds. Look, H plus, Cl minus, Na plus and OH minus. Now they exchange their ions. What? Cl with Na, NaCl plus minus attract each other,
and OH negative and H plus attract each other and forms H2O. So this particular type of reaction is known as the neutralization reaction. Clear? 2-3 बार देखिए, सुनिए, समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. यस. अब इससे पहले ये बात मैंने बताई आपको कि क्या है ये आयनिक कंपाउंड्स हैं दोनों यहां पर, ठीक है, क्योंकि इनमें आयंस आर प्रेजेंट, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. और अभी भी मैंने बात की थी आपसे प्रेसिपिटेट के बारे में. प्रेसिपिटेट के बारे में जब बात की थी, हमने कहा था जो प्रोडक्ट बनता है अगर वो इनसॉल्युबल फॉर्म में बनता है सॉल्यूशन के साथ में, दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेट. एंड इन शॉर्ट वी राइट पीपीटी एंड टू शो वी शो a downward arrow. We can see an example like when we react AgNO3 silver nitrate plus NaCl sodium chloride. These are the reactants, and after the reaction what they form, because they are the ionic compound, just I have told you, plus portion, and in this is the plus portion. Now they combine with each other, Na with NO3 and Ag with Cl, and Ag with Cl. Now they form AgCl plus NaNO3 sodium nitrate, and this is the silver chloride. This is in aqueous form, solution form. This is also in aqueous form, solution form. And the product form NaNO3 remains in solution, solution में रहता है. And AgCl है silver chloride. It precipitated out, मिलता तो solid की form में है, but it is a precipitate. Silver chloride precipitate form में मिलता है. So in this reaction one product is precipitate, one product is in the form of precipitate AgCl, नीचे बैठा मिलता है टेस्ट ट्यूब में, और ये सॉल्यूशन के अंदर NaNO3 मिक्स रहता है. So because one of the product is AgCl and it is in the form of precipitate, so this type of reaction is known as the precipitate reaction. प्रेसिपिटेट रिएक्शन. तो मैंने आपसे 2 तरह के रिएक्शंस की बात की अभी. When two reactants in aqueous form, generally in aqueous form, combines with each other, react with each other, and one of the product is precipitate, it is known as the precipitate reaction. And second reaction I have just told you, the neutralization reaction. Neutralization reaction is those type of reactions in which an acid reacts with a base and forms salt and water. Those type of reaction is known as the neutralization reaction. आखिर मैं इन चीजों को बता क्यों रहा हूं आप लोगों को? Because the precipitate reaction and the neutralization reactions, these are the part of double displacement reaction. Double displacement reaction in generally. ऐसा नहीं है कि सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस प्रेसिपिटेट हों या न्यूट्रलाइजेशन हों, बट इन जनरल ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेट रिएक्शंस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. या तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होंगे वो या होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. सो इफ इन पेपर comes that write an example of precipitate reaction, then you can write the double displacement reaction in which precipitate is forming, जिसमें precipitate बन रहा है. And neutralization reaction, it is also a type of double displacement reaction
एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और वाटर बनाएंगे. लुक दिस एग्जांपल. व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर? AgNO3, when it reacts with sodium chloride, it forms silver chloride and sodium nitrate. It is the sodium nitrate. Sodium nitrate. Sodium nitrate. इसमें क्या हो रहा है वास्तव में कि एक्चुअली यहां पर आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं. Ag के साथ ये नेगेटिव पार्ट आया इसका Cl, और Na के साथ इसका नेगेटिव पार्ट आया नाइट्रेट. In this particular reaction actually the ions are being exchanged. वास्तव में क्या हो रहा है? Actually the ions are being exchanged. यहां पर वास्तव में जो नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस आर बीइंग एक्सचेंज्ड with each other. एक दूसरे के साथ में आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं. NO3 की जगह Cl आ गया और Cl की जगह पर NO3 आ गया. इट क्लियर? तो इसमें क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना? डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है. आयंस आर एक्सचेंजिंग बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड एक्सचेंजिंग ऑफ द नेगेटिव पार्ट्स. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 बार, 2 आयंस का. सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज द व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर हो रही है मेरी बात? कि व्हेन इन दोज रिएक्शंस वेयर द आयंस आर बीइंग एक्सचेंज्ड बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मिंग कंपाउंड्स, these reactions, such type of reactions are called as the double displacement reaction. Clear? ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. बट इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन. क्या ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है? यस, इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन बिकॉज वन ऑफ द प्रोडक्ट इज PPT. One of the product is PPT, precipitate. So it is an example of both double displacement and also of precipitate reaction. Now look, neutralization example. Just you have done HCl plus NaOH. This is an acid, hydrochloric acid. This is a base. And when these react with each other, what is actually happening? Ions are being exchanged. यहाँ पे तो exchange हुए हैं. H के साथ इसका OH और Na के साथ इसका Cl. That means ions are being exchanged. Ions are being exchanged and forming the salt NaCl, नमक, and साथ में क्या बना रहा है? Water, लिक्विड फॉर्म में है. तो यहाँ भी in this reaction also ions are being exchanging with each other. So this is also an example of double displacement reaction. But along with the double displacement reaction, it is also example of neutralization reaction. ये double displacement का भी example है और साथ साथ में neutralization example reaction का भी example है. So double displacement reaction are actually those type of reactions in which ions are being exchanged. Ions are exchanged between the reactants or the compounds, generally in aqueous forms, solution forms. Actually, double displacement reaction occurs generally in aqueous forms. ज़्यादातर ये जो reactions हैं ये aqueous forms में होते हैं, solution की forms में ही होते हैं. Some examples, some exceptions are there. कुछ हैं ऐसे exceptions जहाँ पर दोनों reactant aqueous form में ना हो सकता है one reactant may be in solid, but generally these reactions occur in solution form, aqueous forms. So those type of reactions in which ions are exchanged between the reactants in its solution form, aqueous form, known as the double displacement reaction. And double displacement reactions may be a precipitate reaction,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी हो सकता है, एंड इट ऑल्सो मे बी ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकता है। इज इट क्लियर? अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑल्सो नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Displacement reactions are also known as the exothermic reaction. Why? Because all the displacement reaction release a byproduct, heat. They release the heat. So if heat is releasing in reactions, then those type of reactions are known as the displacement reactions. Clear? So, but displacement reaction is also an example of exothermic reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होते हैं, एक्सोथर्मिक, ऑल द डिस्प्लेसमेंट आर द एक्सोथर्मिक। क्लियर? सो लाइकवाइज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट भी हो सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं है, बट ये फॉर्म है कि ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो इन दिस वे यू केम टू नो some more type of reactions. Exothermic reaction, which release the heat, and all the displacement reactions are the exothermic reaction. And in double displacement reaction, you came to know two more type of reactions: precipitate reactions and neutralization reaction. Clear? Precipitate, every precipitate reaction is of double displacement reaction, but every double displacement reaction is not of precipitate reaction. Clear? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं। तो यू केम टू नो थ्री मोर टाइप ऑफ रिएक्शन: एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेट रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, एंड दीज रिएक्शंस आर जनरली टेकन प्लेस इन द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में होते हैं क्योंकि बिकॉज आयंस आर एक्सचेंज्ड, ions are exchanged between the reactants. Is it clear? So this is whole about the part 7. In this I have introduced the what is the double displacement reaction and precipitation reaction and the neutralization reaction. In part 8 I will tell you about some more examples of double displacement reactions. Is it clear? तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, थैंक यू वेरी मच।